एआई की वजह से 80% मार्केट यूएस का इम्पैक्ट हुआ है. It can potentially replace jobs that involve students to auto-generate essays. From AI software has increased rapidly, with the market expected to be worth 120. और एआई जस्ट अभी आया ही है और इंडिया के अंदर सोचो क्या डिजास्टर हो सकता है बिकॉज ऑफ एआई. बहुत सारे डेवलपर की जॉब जा रही है, डिजिटल मार्केटर्स की जॉब जा रही है. क्या एआई एक्चुअल में इम्पैक्ट कर सकता है इंडिया को? अगर आप लोगों को जानना है तो हमने इस वीडियो को, पॉडकास्ट को इसलिए ही क्रिएट करा है कि आप एक्चुअल में असलियत जान सकें. मैंने इंडिया के एक टॉप डिजिटल मार्केटर को इनवाइट करा है इस पॉडकास्ट के अंदर और हमने बहुत डिटेल में बात करी है एआई के बारे में. एआई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है. अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है तो इस पॉडकास्ट को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना. ऑलराइट दीपक, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट बिकॉज आपको पता है कि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था इन 2017, मैं साइबर कैफ़े में गया हुआ था और मैं बस सीख रहा था डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर. तो पहले मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे देख के करा. फिर मैंने कहा यार मुझे एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज चाहिए और गूगल पे ऐड मुझे दिखाई दिया डिजिटल दीपक का. और दीपक का जब मुझे वो दिखाई दिया और मैंने फ्री डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, उसके बाद दीपक के सारे कोर्सेज एक करके मैंने लेना स्टार्ट कर दिया और मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग. Fantastic. Glad to know that, bro. एंड यू आर माई वेरी अर्ली मतलब मेंटोर. एंड उसके बाद धीरे धीरे करते करते एंड में अब सैम ओवेंस, अब बाकी चीज़ें खुद से सीखना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत कुछ सीखा आपसे. दीपक, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं आपको शुरू से फॉलो कर रहा हूँ. आप एक बार, मेरी ऑडियंस आपको नहीं जानती है तो आप एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की आप क्या करते हैं, कैसे आपने स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया था 2008 में विद अ मोटरसाइकिल ब्लॉग एंड वो मोटरसाइकिल ब्लॉग 4 साल के लिए मैंने रन किया था एंड इट वेंट ऑल द वे टू 1 million पेज व्यूज अ मंथ इन 2011 एंड 2012. एंड उसके बाद 2012 में मैंने ब्लॉग को सेल कर दिया फॉर $25,000 बिकॉज SEO ट्रैफिक थोड़ा स्टैग्नेट हो गया एंड टू मच कॉम्पिटिशन वॉज देयर. एंड ये भी रियलाइज किया कि एडसेंस से यू कांट मेक मच मनी. And at that time, there were no super bikes in India. There was not any motorcycle accessories. Maximum was like 250cc motorcycle. इसलिए bike market was not like a very good opportunity, and I wanted to explore more. So इसलिए सेल करके I came to Bangalore और 5 साल तक InstaMojo, Razorpay, Practo, ये सारे स्टार्टअप्स में मैंने डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के पोजीशन में वर्क किया था. और उसके बाद 2017 में आई स्टार्टेड सेलिंग कोर्सेस ऑन डिजिटल दीपक और डिजिटल दीपक वाज स्टार्टेड इन 2013 इटसेल्फ. एंड 2013 से आई वाज जस्ट ब्लॉगिंग ऑन डिजिटल दीपक, सिर्फ ईमेल लिस्ट बिल्ड कर रहा था बट मोनेटाइज नहीं किया. और 2017 में एक कोर्स लॉन्च किया, गूगल एड्स मास्टरी कोर्स, एंड उसमें 2.5 लाख रेवेन्यू आया और मैंने जॉब छोड़ दिया. और उसके बाद फेसबुक एड्स मास्टरी, SEO मास्टरी, 100 डे ब्लॉगिंग कोर्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए थे उसके बाद. सो ऐसे ही मेरा जर्नी इन शॉर्ट पास्ट 15 years का जर्नी, दैट्स हाउ इट टर्न्ड आउट. और ये सारे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के आपने नाम लिए सारे मैंने करे हुए हैं. और ये 100 डे ब्लॉगिंग वाला भी मैंने स्टार्ट किया था. एंड एक फनी बात बताता हूँ आपको. जब मैं इस इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहा था कि सबसे पहले लोग देखते हैं मेंटोर को, फिर मेंटोर को कॉपी करने की स्टार्ट कर देते हैं. तो फनी बात ये है कि मैंने आपका नाम डिजिटल दीपक था ना, तो मैंने डिजिटल दहरे के नाम से स्टार्ट किया. और एक पोस्ट आप डीडी बन गए. हाँ, आप लोगों ने मुझे डीडी बुलाना स्टार्ट कर दिया आपकी तरह. तो हुआ क्या था कि मैं सोच रहा था कि यार कैसे अपने एक मार्केटिंग का नाम रखूं और अपना नाम कैसे मैच करूं. तो आया डिजिटली नाम समझ में आ रहा था कि यार कुछ ऐसा जो राइम कर जाए डीडी के साथ. और आपने एक बहुत पहले पोस्ट भी डाली थी, पीपल आर कॉपिंग माय नेम, डिजिटल ये. तो आपने उसमें बनाया था कि बस धैर्य का सही है. एक पोस्ट में आपने बहुत पहले कमेंट करा था कि ये सेंस करता है लेकिन बाकी का सेंस नहीं करता. डिजिटल राज, डिजिटल सोम्या, डिजिटल पिंकी नेहा. ये बहुत पहले. और यू इट राइम्स सो इट मेक्स सेंस. हाँ. और ये करते करते मतलब काम करते करते ब्रांड बन ही गया. एंड मैंने आपको बहुत क्लोजली और डीपली फॉलो करा है. दीपक, आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक? मतलब आपने इतना टाइम हो गया, मतलब 15 साल हो गए, अराउंड 10-15 years. हाँ, तो मैं 5 साल से तो आपको फॉलो कर रहा हूँ. मतलब जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2017 से मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था. आपकी जर्नी ये कैसी रही है अभी तक?
जर्नी अभी एज ऑफ नाउ इट लुक्स प्रेटी गुड, इट्स अनफोल्डिंग प्रेटी वेल. जो भी 2017 में किया था वो मास्टरी कोर्सेज, फ्री लीड मैग्नेट्स, वही स्ट्रेटजी अभी फॉलो कर रहा हूँ. बट अभी उसका क्वालिटी it is much better. The office that I'm sitting in right now is much better. Life has become better because I have just been focused on one thing instead of doing n number of other things. सिर्फ digital marketing में focus किया. And abhi recently, if you have to look at journey from 2017 to 2023, past 6 years में one thing that we have started becoming better at is content production and content creation. उसका quality बढ़ा दिया. Our prices of the courses also it has increased, and we have also introduced high ticket programs like Alpha Club, and that has been the biggest change compared to how it was before. And abhi past 2 years में क्या हुआ. दीपक, मैं आपका देखा स्टार्टिंग से आपने लो टिकट प्रोडक्ट पे फोकस करा, एकदम से कहाँ से दिमाग में आया कि मुझे हाई टिकट पे जाना है? One thing is that the ad cost, Facebook ads, Google ads, सबका ad cost बढ़ रहा है. और मैंने रियलाइज़ किया कि हाई टिकट सेल करने में मार्जिन्स ज़्यादा होता है, एंड यू कैन स्टार्ट पेइंग योर सेल्फ अ गुड प्रॉफिट मार्जिन टू टेक होम एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, विदाउट विच इट इज़ डिफिकल्ट टू सस्टेन फॉर द लॉन्ग टर्म. बिकॉज इनिशियली 2017 से 2020 तक आई वॉज सिंगल. In fact, until 2022, past 5 years, I was single. And उसमें living cost is very less when you are single. You are sharing a room with a flatmate, and एक छोटा सा ऑफिस था. And उसमें whatever I was doing at that time, मैंने फोकस किया कि हाई टिकट बाद में देख लेंगे. I knew that I have to launch high ticket, but at that time confidence नहीं था कि वैल्यू क्या होगा डिलीवरी में. And how will I justify a price point of 2 lakhs or 5 lakhs? And can I bring that kind of success to people? So rather than not having enough confidence on myself to sell high ticket, I was not having confidence on the market. करके like 2 to 5 lakhs pay करके ये बंदे like can they get the value out of it? So that was the biggest problem I had. But when I see so many success stories of people starting with nothing, and then they went to 2 lakh a month in income, 5 lakh a month in income. Some people even have crossed 10 lakh a month in income. मेरे students ही तभी confidence आया कि हम भी high ticket sell कर सकते हैं. And I also went and joined a lot of high ticket programs. That is also very important for building that confidence. Like Sam Owens joined किया था, and Sam Owens का mastermind when I joined it was $30,000, and then it became $36,000. अभी Sam Owens ने shut down कर दिया सब. But at that time when I रिफंड आ गया है मेरा. Yeah. Oh, okay. Partial refund. Yeah. Because it shut down while you were at it. But when I was there, entire 1 year का attend किया, and I joined the high ticket mastermind myself because I wanted to know इनका delivery model क्या है, and उसमें value आता है कि नहीं. And मैंने value actually absorb किया even after paying $30,000, which is as much as, let's say, one MBA in ISB will cost you that much, right? 20 to 30 lakhs it will cost. So एक 1 year program के लिए इतना pay किया, and I observed, am I getting value out of this? And I observed that mindset change में maximum value आया, right? And that mindset change changes everything. Like for example, Alpha Club हमने launch किया after joining Sam Owens Mastermind with a similar model. And Alpha Club में ही ROI आ गया जो भी मैंने invest किया. So when I invested in high ticket programs, तभी mindset change हुआ, so that I can also charge high ticket, because you are like, you cannot morally charge high ticket if you are itself hesitating to join high ticket program. Right. So Sam Owens का mastermind join किया, उसके बाद का mastermind join किया, उसमें spend किया हमने, and both these actually helped us a lot in terms of us learning a lot about businesses, how to conduct our business. And इसी में confidence आया कि हम भी high ticket sell कर सकते हैं, and उसमें एक delivery model बनाया. And right now we are focusing on the mastery courses, free lead magnets, organic content marketing, and everything goes to a high ticket. And जो भी revenue हम high ticket में करते हैं उसमें customer acquisition cost ही नहीं है अभी. And I want to keep it that way. So everything is a profit. And after a very long time we are seeing good profits in the business finally. And yeah, that is how the journey has evolved.
या मैं आपसे बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ उस चीज़ से, क्योंकि जैसे लो टिकट प्रोडक्ट हम बना के सेल कर रहे थे तो कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था, तो प्रॉफिट मार्जिन और वो सारी चीज़ें इक्वलेंट हो जाती हैं एक टाइम बाद आके, क्योंकि थोड़ा सा वो एग्जॉस्ट हो जाता है फनल। अभी यही चीज़ हमारे साथ हुई कि हमारा इंस्टाग्राम वाला बहुत अच्छा बिका, हमने 1 CR टच कर दिया खाली एक ही प्रोग्राम से जो 1999 का था। इंस्टाग्राम यूनिवर्सली सब यूज़ कर रहे हैं और मेरा इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर था। हम 1 CR से ऊपर पहुंच गए, एकदम से हमारा फेसबुक पेज रिस्ट्रिक्ट, बूम। और 10 लाख से घट के महीने से हम 1.5 लाख पे आ गए, जो कि ऑर्गेनिक हार था। एंड वो बहुत डिजास्टर था मेरे लिए। और मैंने सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फेसबुक पे नहीं करना है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, 2-3 महीने में बहुत पागल रहा। और उसी के चक्कर में फ्रस्ट्रेशन की वजह से सैम ओएस को हमने ज्वाइन किया। वहाँ पे चीजें सीखने स्टार्ट करी। वहाँ पे एक ब्रायन मॉनकार्टा था, उसको अपना फ्रेंड बनाया, उससे बातें करनी स्टार्ट करी, बहुत सारी चीजें सीखी। अब मैंने देखा कि सब जैसे हाई टिकट लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा हाई टिकट में ये होता है, ये होता है। मैंने कहा नहीं, कुछ अलग लॉन्च करना है, लेकिन हाई टिकट में ही करना है। सो मैंने क्या किया, सारे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया, उनसे पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, उनसे पूछा कि उनके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है। तो जब हमने उनकी प्रॉब्लम निकालना स्टार्ट किया तो बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम मिल रही थी उसके अंदर। एंड वो कॉमन प्रॉब्लम का हमने एक सॉल्यूशन बिल्ड करा। एंड सॉल्यूशन बिल्ड करने के बाद हमने एक फाइटर जेट मैसेजिंग इंजन बिल्ड करा कि वो हमारे मैसेज को स्प्रेड करेगा। और सरप्राइजिंगली ये हुआ कि वो इतने सारे लोग हमारे पास लेके आया ना। और हमारे पास पहला फनल हमने रखा था कैलेंडली पे, फ्री वाला रखा था कि लोग आके मीटिंग बुक करेंगे। 300 पहले दिन में मीटिंग बुक हो गई। एंड मैं पागल हो गया, मैंने कहा शिट, ऐसे नहीं होगा। वो क्या स्ट्रैटेजी था फाइटर जेट वाला? फाइटर जेट, हाँ, फाइटर जेट बेसिकली ये था कि हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व करा। हमने एडवर्टीजमेंट चला दिया और लोग कैलेंडली के पास आ रहे थे, कैलेंडली पे बुक करने के लिए आए थे। और हुआ क्या कि ऑर्गेनिक भी हमारे फॉलोअर्स है, तो उनको पता है कि रेवोल्यूशन आने वाला, मेरा जो प्रोग्राम था, तो एकदम से आके बॉम्बार्डेड हो गया वो। तो हुआ क्या कि, और चलाना आता नहीं था उस टाइम पे, सिस्टम बस सेट किया था, तो इतने सारा हमारे पास फ्लो बढ़ गया। फिर हमने सारी चीजें कैंसिल करके सबको सॉरी बोला। उसके बाद हमने एक फिल्टर लगा दिया कि इट्स गोइंग टू बी 999 फनल, कि अगर आपको मेरे से बात करनी है, ऑल्दो ये रिफंडेबल रहेगा, लेकिन ये 999 का रहने वाला है। So 1 hour consultation for 999. हाँ, 999 दैट इज रिफंडेबल। और उसके बाद भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसके साथ मीटिंग करना है कि नहीं करना। अगर हाई टिकट प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वो रिफंड हो जाएगा। हाँ, और बेसिकली उसमें भी हमारा ये था कि हम ये चेक करेंगे कि बेसिकली वो एलिजिबल है हमारे साथ काम करने के लिए, नहीं कि एटलीस्ट दे आर मेकिंग 1 लाख और नहीं समथिंग वो इतना बना रहे। तो हमारी टीम उसको रिव्यू करती है। और क्लोजिंग मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि क्लोजिंग में मुझे बहुत मजा आता है क्लोजिंग करने में। तो काफी सारे आए, हमारा जनवरी फुल गया, फरवरी फुल गया, मार्च थोड़ा सा ऐसा गया हमारा। अभी चल रहा है, मार्च में भी क्लोजिंग हो रही है, बट हमारा बहुत अच्छा जा रहा है ये। और इसके अंदर मैंने चेंजेस किए करे कि मैंने बेचने की कोशिश नहीं करी किसी को, मैंने बेचा ही नहीं, आई जस्ट मेक देम बाय। मैंने उनको प्रोग्राम ही ऐसा बन गया। अब मैं रेवोल्यूशन के अंदर AI लेके आ रहा हूँ फेसबुक के अंदर। फेसबुक में पिक्सल वगैरह जाने वाला है, पिक्सल ट्रैकिंग वगैरह, ये सारी चीजें। तो वी आर प्रिपेयर्ड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। तो अब ये रेवोल्यूशन ना बनते बनते जनवरी में इसका करिकुलम चेंज हुआ, फरवरी में भी चेंज हुआ, और ये और बेटर होता जा रहा है। तो हम इसको और टाइम के साथ इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं। तो दीपक, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने AI के लिए क्या सोचा है, AI के लिए क्या तैयारियां करी हैं आपके लिए? See, अभी जो भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स हम चलाते हैं उसमें लॉट ऑफ implication of AI is already there. क्योंकि earlier you had to manually optimize the campaigns. अभी Google Ads open करो, daily budget set करो, there is something called performance max campaign. So performance max campaign में automatically keywords add हो जाता है, and all these tools are bringing in AI to us. So that is definitely a huge benefit because अभी running ads एक skill नहीं है anymore. Designing a funnel and understanding the customer needs is the primary skill which will not Right. क्योंकि मेरा the way I look at it, मेरा view ये है कि initially when machines came they replaced manual labor first. अभी जो भी construction हो रहा था, road construction, सब में अभी machine का involvement ज़्यादा है। and even when you look at let's say manufacturing production line में, when you look at Tesla, उसमें सब robots आ गए। so जो भी manual labor was there, वो सब machines ने ले लिया mostly, right? बहुत intense manual labor बहुत small percentage में अभी भी कर रहे हैं लोग। और वो है first revolution का machines। first I wouldn't say that AI because उसमें full intelligence इतना नहीं है, but it is still some form of intelligence. It's an early form of AI. And then अभी जो भी
manual work है which is on the computer, which is knowledge work. So everybody went to knowledge work. Like, US में देखो 90% will be sitting in front of a computer and working. Even before that, they were like doing some accounting or something like that. So उसमें जो भी intellectual work है, that is also now being taken over by machines. Chat GPT आ रहा है, and tomorrow, legal research, medical research, let's say anything that is accounting, finance, उसमें AI का बहुत रोल प्ले होगा. And also self-driving cars, जो भी है, सब आने वाला है. But what will not be replaced by AI is the emotional component of it, because physical component taken over by machines. Right now, the revolution is happening where the intellectual component is being taken over. So anyone who is sitting behind a computer without human interaction and sitting and doing some coding or Excel sheet or spreadsheet work or जो भी काम करते हैं, that will be taken over by AI. But the emotional component है ना, that emotional component, connection, empathy, that will not be replaced by AI, because AI कैसे कर सकता है? Even if a bot is talking to me, it is just going to be information. There is not going to be any feelings or emotions. So अभी future में जो भी direct contact में होते हैं लोगों के साथ, like let's say a customer success manager, not a customer support executive, but a customer success manager हो गए, or anyone who is like having a relationship with a client, having a community, content creation like podcasts like this and things like that. ये सब कुछ का बहुत opportunity है, and people who do not adapt to this will have a lot of problem in the future, because communities build करना है, because communities is all about belonging, empathy, connection. And otherwise, if you are like sitting all alone, let's say you are sitting all alone in a home and everything is taken over by machines. Let's say machine cook bhi karta hai, you can't stay alone. You need to connect with humans, you need to talk, you need to belong as a part of a community. And उसमें थोड़ा emotional component है, empathy है, fun है. So all the business will now go towards that direction. Like जो भी कर रहे हो, if you have been just doing it without human connection, अभी human connection का element उसमें होना चाहिए. राइट. और इस चीज को कनेक्ट कर सकता है ईमेल मार्केटिंग से. जो वर्ड्स हम लिखते हैं वो शायद एक रोबोट्स नहीं लिख पाएगा, उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली चीज है. एंड आई लव्ड अबाउट योर ईमेल थिंग इज कि आप जो मैसेजेस लिखते हो ना, तो जैसे मैं पहले आपके बहुत ईमेल्स पढ़ता था कि इतने लंबे लंबे आपके ईमेल आ रहे हैं, मैं उसको पूरा देखता था. मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि दीपक मुझसे ही बात कर रहा है, और मैं बहुत खुश होता था, अरे दीपक ने मुझे मेल भेजा, दीपक ने मुझे मेल भेजा. जब 2017 में स्टार्ट किया था, मैं बोला देख डिजिटल दीपक ने मुझे मेल भेजा, ये देख. तो फिर मुझे पता लगा कि अच्छा ये ऑटोमेटेड होता है, सीक्वेंस बनता है, ये करता है. लेकिन उसने इमोशनल मतलब जो इमोशंस ईमेल्स होते हैं, तो उससे एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है. और मुझे ऐसा लगता था कि मैं दीपक को बहुत पहले से जानता हूँ, या बहुत सारी दीपक इज लाइक माई एल्डर ब्रदर और ही इज माई मेंटोर. तो मतलब बेसिकली मैं आपको उसी तरीके से देखता था जब आपकी ईमेल मेरे पास आते थे. आपने बिल्कुल करेक्ट बोला. ऐसा भी हो सकता है क्या दीपक इन फ्यूचर कि जैसे इमोशंस, फीलिंग्स मशीन समझ पाए, कभी ऐसा हो सकता है? सोचा आपने कभी ऐसा? See, कर सकता है. Like even right now ChatGPT is writing articles, and मैं एक article write करके I could put it on ChatGPT, edit it and send it via an email. Tomorrow there could be a situation where a robot could say, hey Deepak, it looks like you are feeling down. What's up? What's your problem? थोड़ा respond कर सकता हूँ. Like, now we are talking to Alexa. Maybe tomorrow Alexa or, Google Home will talk to you back. But it will be a very, very small component of, let's say you come to home after work and nobody is at home, and कुछ conversation चल सकता है robot के साथ. But it is not going to fill your emotional need. Because we have seen, there are people, let's say बहुत अमीर लोग हैं, let's say $100 million का नेटवर्थ है, but family नहीं है, relationship नहीं है, कोई relatives नहीं है, and they will have a lot of helpers. They will have a gardener, they will have a cook, and humans है, robots नहीं है, but still they feel lonely. Why? Because belonging is a very, very human need. So tomorrow robots can take away a lot of these things. Like, if this $100 million or a billionaire is sitting alone at home, even the cook might ask, sir, are you all right? You look dull today. But still वो emotional need fill नहीं होगा, because the cook is not your family. It's not emotional connection नहीं है. They are not your friend. You don't have fun with them. You don't spend time with them. So as more and more things are taken away by robots, it makes enough time for you to hang out with friends, enjoy spending time with them, and build a relationship with them.
So that will never go away. Abhi Alpha Club mein, when you look at all the people who are in Alpha Club, more than the content that we are producing for them and more than the services that we are giving for them, because content koi bhi de sakta hai and services ek AI bot bhi de sakta hai, ek software bhi de sakta hai. Like right now we are helping our clients build landing pages and funnels. Tomorrow an AI tool can build that. वो सब कुछ replaceable होगा. But now we are going to Goa day after tomorrow for an Alpha Club event. 3 दिन का event है. Everybody is so excited. And they are excited because अभी already relationship है between Alpha Club members. They are looking at each other and getting inspired by each other. Like, not just on how you are doing business, but also on how you are leading your life. What kind of things are happening in your life. So that robot can, never, go ahead and replace at all. So अभी मान लो कि future में, let's say 50 years down the line, everything is taken care by robots. All right. सिर्फ electricity चाहिए, solar power से electricity आ जाएगा. And then we will get to a stage where humans don't need to build machines. Machines will build machines. Abhi, when you look at software is building software. So tomorrow machines will build machines. And once you reach that stage, maybe we will have a stage like iRobot ki tarah, you have like robots walking around and wo bhi intelligent bhi hai. But what is the use of it? I can't have a relationship with a robot. I can't love a robot, right? I can like a robot. I cannot love a robot. So Abhi, if everything is like whatever work that humans are doing, providing products and services to each other, if robots are providing it to us, what will we do with the rest of the time? Chalo, if you are single, go on Tinder, Bumble or Hinge and meet someone, go on a date. Or if you are like married, have kids, spend more time with the family and make a deeper bond to lead to a more satisfying life. So I won't say that it's a threat because robots are making things more efficient. Abhi jo bhi wealth we have today, it's because, let's say, hundreds of thousands of people are not growing vegetables and toiling in the farms anymore in the hot sun. They are sitting and, working on something like software, creating content, sab kar rahe hain. That is why the quality of life has improved, right? So tomorrow, the quality of life will even improve. Isme ek hi problem hai. That possible problem is that capitalism will increase the wealth inequality and governments need to come up with something like universal basic income and like, make sure that everybody has roti kapda makan sabke paas hoga. And then on top of it, if you want to do something, work on something, make money, usme quality of life you can improve. But let's say we get to a stage where houses are being 3D printed, right? And cars are being self-driven, sab ho raha hai. Then it will reduce manual labor a lot. Like imagine 40 years back, 50 years back, my dad, when he had to travel like, 20 kilometers, not my dad, but let's say my grandmother, even when they had to travel 20 kilometers, they need to have a bullock cart. And usme there was one person who is like riding the bullock cart. Now you can take a train. It can transfer thousands of people with just like, maybe a few people who is the crew, right? So efficiency बढ़ रहा है. So you don't need to be afraid of AI. Embrace AI. कुछ लोग कहे they will tell that hey, AI will become sentient and उसका अपना ही agenda होगा. I don't know much about it, so I cannot comment. I don't know whether that risk exists or not. I cannot say for sure that that risk does not exist, that we have a Terminator kind of future. But let's see how things play out. But I think right now this is the most interesting times that we live in, and in our lifetime, the next 20, 30, 40, 50 years, we will see something revolutionary that humans have never seen before. Right. दीपक, पता है मेरे साथ अभी 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ. हम ना LMS सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ना उसका फ्रंट का पेज लॉगिन वाला चाहिए. एंड मेरा जो भाई है, ही इज वर्किंग इन विप्रो और वो डेवलपर है, लैंग्वेजेस के ऊपर काम करता है, जावा, पाइथन वगैरह एंड ऑल. तो मैंने उसको बोला कि भाई फ्रंट पेज में मदद कर दे थोड़ा सा इसको करने में. तो उसने कहा बे रुक जा. उसने खोला ChatGPT और फ्रंट पेज का लॉगिन का बोला, उसने कोड आया, कॉपी पेस्ट. मैंने कहा शिट. मैंने कहा ये क्या था? मैं कहा इससे तो तेरी भी जॉब खतरे में हो सकती है. मैंने कहा खत्म, तेरी जॉब गई अब. तो फिर मैंने क्या करा, मैं आके यहाँ बैठ गया. मैं थोड़ा परेशान हो गया, ओवर थिंक करने लगा चीजों को लेके, यार ये जा सकता है, वो जा सकता है. फिर मैंने बैठ के सोचा यार वी कैन यूज AI एज अ वेपन. लाइक कितने लोगों को अभी AI के बारे में पता हुआ है? कितने लोगों AI बस लोग अभी ChatGPT के बारे में पता है. ChatGPT के अलावा इतनी सारी चीजें आ गई हैं जो मैं रेवोल्यूशन के अंदर निकाली है हमने. तो बेसिकली
मैंने क्या करा, जितने मार्केट में AI के अच्छे अच्छे कोर्सेज थे सारे खरीद लिए मैंने, और मैं उनको पढ़ने बैठ गया, करने बैठ गया। और अब मुझे इतना पता है कि मैं अपनी सेल्स को 5x 7x लेके जा सकता हूँ बिकॉज ऑफ द AI। और इतना टिपिकल नहीं है वो कि कुछ हमें कोड करना है, कुछ करना है। इट्स समथिंग विच इज वेरी ब्यूटिफुल। और जिसको यूज करना आ गया वो अभी आगे जाने वाला है, वो खेलने वाला मार्केट के अंदर। तो मैंने जितने सारे कोर्सेज थे सब पढ़ना स्टार्ट किया, चीजें करना स्टार्ट किया। मैंने अपने ट्रेनिंग को देखा कि अच्छा अब मुझे इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा, मार्केट में नई तरीके की एड कॉपी बनानी पड़ेगी, आई हैव टू रिवैम्प एवरी सिंगल थिंग। और मैंने उस पर काम चालू कर दिया एंड मुझे इतना पता है कि अब आगे जाके बहुत तगड़ा जाने वाला है। सो वही चीज थी कि लोगों की अभी प्रॉब्लम ये आने वाली है, एक मार्केट का फियर होता है ना। अगर मार्केटर आर वेरी स्मार्ट और उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, रिसर्च वर्क करके ये सारी चीजें जाने वाली, लोगों को वही चीज दिखाओ। और लोगों की एक्चुअल में नीड भी वही है कि उनको वो चीज चाहिए, अगर वो करना सिखा दे। और उस मॉडल, जब आप किसी नीड पे काम करते हो ना, यू जस्ट मेक देम बाय, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। और मैंने वही करना चीजें स्टार्ट करी। तो दीपक, आई जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे आपका हाई टिकट है, आपका स्टार्ट होता है 2 लाख से, राइट? अल्फा क्लब, एंड आपका मास्टरमाइंड भी है कोई, बैकएंड मास्टरमाइंड? Alpha Club is the mastermind right Okay. now. And Alpha Okay. Club ka price ranges from 2 lakhs to 5 lakhs depending on what additional services we are providing for them. थोड़ा customized है, but minimum is 2 lakhs. ओके। And Okay. 10 lakh mastermind अभी we are still working on it, but we have not launched it yet. ओके, और कब प्लानिंग आपके बैकएंड मास्टरमाइंड लॉन्च करने की? और 1 साल हो जाएगा. We are now building a lot of content on the top of the funnel, and we are rebuilding the entire top of the funnel because that is what is giving strength. Because whatever list and audience that we have built in the past 5 years, abhi past 1 year mein we have not run any ads at all, and without running any ads we have been able to get more than 100 customers for Alpha Club. Wow. And we want to build that audience first, and then we can launch any high ticket mastermind, backend mastermind if we want. या दीपक, मुझे इसके बारे में भी आपसे जानना है कि बिना एड चलाए ये बिल्कुल एकदम प्रॉफिट वाली चीज हो जाती है, दैट यू आर इन 100% प्रॉफिट अगर कन्वर्ट किट का हटा लिया जाए और ईमेल का हटा लिया जाए बेसिकली, And office rent, employee salaries, वो भी है. सो बेसिकली मुझे ये जानना था कि बिना ऐड चलाए, जैसे आपका फनल है, आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, आपका मैंने ऐड चलते हुए नहीं देखा इस चीज पे, आपका शायद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से चलते हुए मैंने अभी कोई ऐड देखा था, लेकिन आपका अल्फा क्लब से रिलेटेड मैंने ऐड नहीं चलते हुए देखा। तो आप कैसे चीजें कर रहे हो, ये सारी चीजें, क्या फनल है आपका? I think very similar to yours. आप तो you get people to book a Calendly call, but you charge 1,000 rupees for it to filter them out. We ask people to apply, एक type form application ले लेते हैं and उसमें qualify करते हैं whether they are the right fit for Alpha Club. If they are the right fit, we have a one-on-one call with them, and one-on-one call में sale हो जाता है. Obviously, you need to learn sales for that, and a lot of Alpha Club members were wanting to learn how to do sales and how to run Facebook ads. So इसलिए we have recently launched Facebook ads mastery course and sales mastery course, and we are also selling it separately for people who just want to learn sales and want to become like a salesperson. So वो mastery courses Alpha Club में bundled है, and that is how we are doing it right now. And एक महीने में we are doing around 200 sales calls, and the 200 appointments आते हैं email list से. And Wow. I don't ignore the email list. I constantly keep delivering value to the email list. That is why people stay on the email list as well. दीपक, मैंने ना बहुत सारे मार्केटर से पूछा, अभी आर्य से, सिद्धार्थ से एंड देव गढ़वी से, जितने भी हाई टिकट सेलिंग के अंदर, मैंने इनसे सबसे क्वेश्चन करा कि आपके लिए फेसबुक ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है या गूगल एड्स ज़्यादा काम कर रहा है? गूगल में भी अभी चीज़ें चेंज हो गई है, जैसे कस्टम ऑडियंस, एफिनिटी ऑडियंस वगैरह, ये काफ़ी बड़ा चेंज आया है, उसमें हम अब कीवर्ड के थ्रू टारगेट नहीं कर सकते। तो आपके लिए, जैसे आपको एक्सपीरियंस हो गई कि आपने दोनों पे ऐड रन करे, तो आपके लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस चीज़ का रहा है? गूगल ऐड कर रहा है, यूट्यूब ऐड कर रहा है, किसका? I think both are equally good. Facebook में you are going and reaching out an audience who don't know about you, and you don't know whether they are extremely interested in going ahead and wanting to purchase your products and services. बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि Facebook ads में सोचते हैं कि people will immediately buy. So Facebook ads में we primarily focus on going ahead and advertising a free course, so that just like you came into the free course funnel and वहाँ से like nurturing होता है,
So lead cost is less in Facebook, but at the same time, you need to target with the right intent on a very early stage of the funnel. That there are going to be people who are not aware about digital marketing. There are going to be people who are aware about digital marketing but not interested in learning it. There are people who are aware about digital marketing, interested in learning it. And then there are people who are aware about digital marketing and immediately want to enroll in a digital marketing course. They are ready to pay. Every other person in the market is targeting that small cohort of people. उनके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना है अभी, and they are ready to pay and enroll in a course. अभी burning desire है और burning need है. But I am targeting the people who know about digital marketing, but they are not really sure whether they have to learn about it, or they are interested in learning it, but they have not come to a stage where they are ready to pay for a course for it. And वो लोगों को हम capture करते हैं, and we keep nurturing them over a period of several years. And अभी Alpha Club में last month we got 2 customers who are in our email list since 2018, just like you. Wow. And 5 years के लिए they have been on the email list, they have been watching the videos, they have been reading my emails, blog posts and सब कुछ, and then they felt like right now is a good time to join Alpha Club. अभी इनका lead cost would have been like 5 rupees or 10 rupees back in 2017. So अभी you are building your own platform and you don't have a software or an app for that yet, but your community and your email list is your platform. That's the distribution channel. वहाँ से you can send people to YouTube or your blog post or ask them to come for an offline meetup also. But email becomes the primary distribution channel. And instead of trying to go to Facebook and pay Facebook, अरे Facebook के पास audience है, I will pay you. Please show my ad in front of the audience. I can basically have an audience, and if I launch a new product, I can tell it to the audience, hey, this is a new product. Like for example, 2020 में हमने internship program launch किया था, and the internship program was a very new model, and I was giving cashback. And a new model try करने के लिए, I would not have gone ahead and advertised this new model because उसमें customer acquisition cost हो जाता है, and then I cannot give a cashback also. So initially when I launched the first batch, हमने 10,000 charge किया और 15,000 cashback दिया, and I told them that you can actually make money from this course. And मेरा confidence था कि like the assignment submission rate will drop, उसमें margin होगा, but I was able to take that risk. But first batch में there was no margin at all. We collected around 57 lakhs and we paid back almost like 52 lakhs. Right, sir, 5 lakhs का margin था. But I was ready to take that risk because I already had the audience. Abhi imagine you own a property like Facebook or Google. Then obviously not such a big property, but even if you own a small property, you can charge other people to advertise on your platform, or you can just advertise your own products on your platform, which is your community and your distribution channel. So Abhi, once you build this distribution channel, then you can test out with new products within this community, and you can go ahead and innovate faster because innovation के लिए cost नहीं होता है. And a lot of people keep running ads for people who are like only 25 years plus of age, because वही mastery courses or skill based courses purchase करते हैं. But I am running ads right from 18 all the way to 60, because अभी 7 साल के बाद those 18-year-old people will become 25-year-old people, no? At that time to acquire them, it will be much more costlier. But right now I am acquiring them at a very low cost. It's just like investing in real estate or crypto or stocks in an early stage. And I'm investing in their relationship. That you get them into the funnel, keep giving them free content and free value. That is why the 25-day free digital marketing course worked so well. Now I am taking it to the next level by creating this 100-day digital marketing course with a much better production quality. And now all the people who are just coming out of college, 17-year-old, 18-year-old guys, everybody is coming into my funnel. And these people have a lot of time. And nobody is giving them free value or free content. High quality course, nobody is giving. So they become super fans. Just like in 2017, you became a super fan of mine. Yeah. And I don't mind waiting another 5 years to keep them in the funnel and then monetize them 5 years later. And jo bhi money wahan aata hai, I will still go and get the people who are like 18 to 20, 20 to 25, and keep building the email list like that and create like a people of like 1 million subscribers. Once you hit like an active subscriber base of 1 million people, then you are like unstoppable, because you can generate revenue by going ahead and launching products to these people. And instead of going and paying a very high customer acquisition cost to get someone who is ready to buy immediately, you go ahead and reinvest it back into acquiring customers who are still
observing, looking at, hey, we should get it or not, maybe not. So get all those people in, because you can get them at 1/10 the cost. Right now, for a digital marketing course, I think easily 500 rupees to 1,000 rupees per lead is what people are paying. And for the free digital marketing course, I am paying like 20-30 rupees per lead. Wow. Yeah. So that is the strategy overall, which has worked for Digital Deepak. And it is not something like a secret that I keep. I have been telling about this in my own masterclasses, in podcasts like this, to a lot of people. But I have not seen many people copy this strategy, because 5 साल वेट करने के लिए किसी के पास पेशेंस नहीं है. राइट, एब्सोल्युटली राइट. एंड दीपक, मैंने भी ना फेसबुक से बहुत सारी चीज़ें सीखी, मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट चला के. अभी मुझे ना एक्चुअल में पता लगा कि जैसे हमारे कॉस्ट पर एक्विजिशन हाई जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास प्योरेस्ट डेटा होगा ना, पहले मैंने ऐड चलाना कैसे स्टार्ट किया, डेनिस यूज स्ट्रेटेजी आपने सुना होगा. ओके, तो बेसिकली What is it called? डेनिस यूज स्ट्रेटेजी. No, I have not heard of it. ओके, मैं बताता हूँ आपको कि बेसिकली पहले हमने अवेयरनेस ऐड क्रिएट करा कि मार्केट के क्या फॉल्स बिलीव है. लाइक पीपल आर डूइंग वेबिनार, वर्कशॉप, मास्टर क्लास एवरी सिंगल डे, एंड दे आर वेरी फेड अप कि फेसबुक में इतना पैसा डाला, इतना निकल रहा है बाद में जाके, तो वो बहुत परेशान हो गया उस चीज से. एंड ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी. और जहाँ रेवेन्यू 10 लाख से घट के 1.5 लाख पे चला गया था और फेसबुक ने बैन कर दिया था, उसके बाद मैं पागल हो गया था कि अब क्या करें. मैं गोवा चला गया एक मास्टरमाइंड में, उसके बाद मैं इधर उधर भटक रहा हूँ. मैंने कहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे पूछूं, क्या करना है. तो हुआ क्या कि फिर मुझे ना पता लगा कि अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है. तो मैंने पहले फॉल्स बिलीव के बारे में पता करना स्टार्ट किया कि लोगों के फॉल्स बिलीव क्या है. तो मैंने फॉल्स बिलीव के ऊपर अवेयरनेस वीडियो क्रिएट करा. अवेयरनेस वीडियो क्रिएट करने के बाद जिस पे अच्छा डेटा मुझे मिला, तो जैसे 25% से 50% पे कितने लोग जा रहे हैं, 50 से 75 पे कितने जा रहे हो, 75 से 100 पे कितने लोग जा रहे हैं. तो मैंने ये चीज़ देखना स्टार्ट किया. उसके बाद मैंने ऐसे 5-6 फॉल्स बिलीव बनाए, उसमें 100 रुपीज़ डाले और देखा किसका डेटा अच्छा बन रहा है. देन उनका डेटा पिक करके मैंने दोबारा से कंसल्टेशन वीडियो बनाया. एंड जब मैंने कंसल्टेशन वीडियो बनाना स्टार्ट करा, तो बेसिकली हुआ क्या कि वहां पे भी अच्छा डेटा मिलना स्टार्ट हुआ. एंड देन आई क्रिएटेड अ अटैक वीडियो. उससे हमारा बॉम्बार्डेड हो गया. अब पता लग गया कि ओह, दिस स्ट्रेटेजी इज वर्किंग वेरी वेरी फाइन फॉर अस. और अभी 1 लाख के प्रोडक्ट के लिए जो मेरा कॉस्ट पर लीड जा रहा है वो 1100 या 1200 रुपए के आसपास जा रहा है. 1100 1200. एंड अगर मेरे पास 10 लीड भी आ रही है तो मुझे कन्वर्ट करना बहुत आसान है. और इसी की तरह 3-4 स्ट्रेटेजी और होता है, जैसे मोट स्ट्रेटेजी हो गया, और भी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होता है. एंड उसके बाद एक और नई चीज मुझे पता लग गई कि एक्चुअल में अगर आप मार्केट के पेन्स को निकाल के लेके आओगे और उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे, आप बहुत पैसे कमा सकते हो. मार्केट में ना तो पैसों की कमी है, ना लोगों की कमी है, अगर आपका मॉडल इस तरीके से है. और मैंने ये भी चीज सीखी 2022 के अंदर, मैसेजिंग इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड जैसे रेवोल्यूशन, जैसा मैंने अपना ट्रेनिंग बनाया रेवोल्यूशन, क्रिएटर्स रेवोल्यूशन, तो बेसिकली उसके अंदर हमने मैसेजिंग के ऊपर बहुत फोकस करा. मैं एक्सपर्ट्स के साथ बैठा जो मैसेजिंग के अंदर प्रो हैं. तो मैं उनके साथ बैठा, मैंने कहा कि मैसेजिंग करना है मुझे ऐसा नहीं करना कि जैसे सैम ओवेंस ने करा है, जैसे यूएबिलिटी ने करा है, या किसी ने करा है. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना कि ऐसा ना लगे कि धैर्य ने कॉपी कर लिया. मुझे कभी ऐसा नहीं करना था. मुझे खुद के एलिमेंट डालने थे. जब मैंने सैम ओवेंस की बात सुनी कि मंकी सी मंकी डू, राइट, तो मैंने एक्चुअल में पहले वही चीज करी थी, लेकिन उसके बाद मैंने कहा नो धैर्य, यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट. एंड इफ यू वांट टू बी सुपर प्रॉफिटेबल, देन जो ट्रेंड चल रहा है प्लस प्रिंसिपल के बेसिस पे यू हैव टू क्रिएट द कंटेंट, और जो कि लोगों को फायदा देगा. लाइक दिस इज अ कंसल्टिंग ट्रेनिंग, राइट. तो उसके अंदर हमने AI भी इंट्रोड्यूस करा और टाइम के साथ साथ हम उसको ओवरऑल पूरा इंप्रूव कर रहे हैं. और मार्केट में जैसा मेरा मॉडल है ऐसा अभी किसी का भी नहीं है, क्योंकि मैं उसमें लोगों को ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको VSL कैसे बनाना है, ये सारी चीजें कैसे करनी है और हाई टिकट कैसे लेके आना है. इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट, एंड वो अच्छा खासा रिजल्ट भी दे रहा है. सो दीपक, जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे आपने अल्फा में स्टार्ट करा, अल्फा क्लब स्टार्ट किया, आपने 2 लाख की प्राइसिंग रखी, आपको डर नहीं लगा स्टार्टिंग में? इससे डर लगता है कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे इसमें? आपको लगा था उसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है ना. Only if you are spending money for leads, then you have a fear, अरे मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा कि नहीं. You already have the audience, you are testing out with a new product, and then you are building on the success of the product. Initially we were like, definitely like, हाँ try करके देखते हैं. Sam Owens is doing it, he is advising sell high ticket. ठीक है, करके देखते हैं. First 30 calls में 10 sales आ गए,
And then we were like, oh, this is working. This looks good. Let's do more of it. So that is why build your own platform, build your own community, and don't depend on just YouTube distribution or social media distribution. Right. Just go ahead and depend on your own distribution, which is your own email list, and you can always bank on it. So people think that like log email nahi padhte hain, but the right people will always read. Like, you know, you were reading the emails, right? And internet mein 90% of the audience are like on some social media drug. They have very low attention span. उनके लिए इतना फोकस नहीं है, इतना अग्रेशन नहीं है, like, you know, कुछ लर्न करना है, ग्रो करना है. They are not like going very deep. They are like constantly TikTok or Instagram reels or YouTube में देखते हैं. But 10% of the audience actually read emails. And if you look at the entire internet audience or general population out there, जो भी बुक पढ़ते हैं ना स्कूल डेज से, लाइब्रेरी जाते हैं और कॉलेज में बुक्स पढ़ते हैं, you know, Kindle खरीदते हैं, and oh, this book is good. Now, as long as, like, you know, you don't need to read too much books also, but as long as you are a reader kind of person, you read at least like one book every month, or you at least buy one book a month. Okay, I like this book, I like this book. People who have a collection of books, this is my target audience. And these people will read emails. These people will read books. I'm only targeting that audience. इसीलिए I'm not very aggressive on social media because उसमें numbers दिखता है, 10,000 views आया, 100,000 views आया. But that number does not translate into revenue because वो entertainment चल रहा है social media में. Lot of people are on social media for अरे बोर हो रहा है, let's browse social media for 1 hour. But people who are very focused, they still use social media. But if they see something interesting, एक ad, like, you know, you are showing them, उसको click करके funnel के अंदर आ जाते हैं, and then they discover you, and then they are like, oh wow, this is great, let me do more of this. And then they consume every content that you have. पुराने YouTube वीडियोस को देखते हैं, कोर्सेज खरीदते हैं, ईमेल को like, you know, even 1000 word articles पढ़ते हैं, blog पढ़ते हैं, books पढ़ते हैं. I am only trying to collect that kind of audience, and I think 1 million people तो है वहाँ out there of that high quality audience. So I am thinking that अभी till date we have generated 2 million leads for the free digital marketing course so far, and 2 million से boil down करके we have come down to 300k. Because over a period of time, people will unsubscribe, emails will go cold, some people don't like your emails, some people can't even read your emails properly. So सब boil down होके अभी 300k है. अभी ये 300k email का open rate and engagement is very high. Now if I start going and getting new leads again, उसमें भी वो ratio होगा where only 15 to 20% of the audience will filter out to be the most important audience. It is just like if you keep boiling the milk and you put it in the stove and forgot, and उसके बाद tea बनाते हो वो condensed milk से, tea is like more tasty, right? So when you are like collecting so many leads, most of the leads are like bad, but eventually you will like boil down to these super fans, and they will stay on your list for 5 years, 10 years, and eventually they will go out of your list. Obviously, given long enough time, they have to go out of your list because they might not be alive anymore. I mean, you might not be alive anymore to send them emails until then. But 5-year, 10-year period may, I think a lot can compound, and then use that revenue to go and get more people like that, and then boil it down. So if you are generating, let's say 1,000 leads a day and 30,000 leads in a month, उसमें I can definitely say that some 2,000 to 3,000 people, let's say 3,000 people, 10% मान लो, those 3,000 people will stay with you for like years, and they are the ones who will buy from you, even if they don't immediately buy, because 10% is a lot to expect for people to buy. They will at least engage. They will watch YouTube video, they will read the email, they will open your emails. Social media engagement हो सकता है, community engagement हो सकता है. राइट. दीपक, मुझे एक और चीज जाननी है आपसे. जैसे आपका अल्फा क्लब है, आप उसके अंदर क्या पढ़ाते हो, क्या सिखाते हो? See, Alpha Club is more of like जो भी चाहिए to take people from where they are to where they want to go, we do that. It is not necessarily this is what we sell. Alpha Club is more of a goal-oriented product. If somebody is coming saying that, boss, I'm already making 1 lakh a month, I'm stuck here, I want to go to 5 lakh a month, I don't know what exactly to do. So it's not like, you know, one size fits all approach nahi hai Alpha Club mein. So we have offline events happening 2 times a year. Abhi this year it is happening in Goa. Last September it happened in Bangalore. So usme that community feeling bahut aata hai.
You have the online groups, you have mastermind calls, you have courses, you have dedicated account manager. Sometimes, very rarely, we obviously charge higher for it, but we also set up the funnels for them because they feel like they can't set it up themselves, or they can't hire someone to set it up. But there are people who come who are very, very technically savvy. उनको content writing आता है और landing page build करने आता है, but they are like not so good at, let's say, doing one-on-one sales. So we tell them, like, entire funnel mein, this is the weak point. So they keep saying, no, that the strength of the chain is the weakest part of the chain. Okay, so we can say the similar thing, that the strength of the funnel is the weakest part of the funnel. So वो weakest part को identify करते हैं और उसको fix करते हैं. So we have seen people who are extremely good at one-on-one sales, but they are very bad at content writing and building a community. तो उनके लिए वहाँ help करते हैं. And there are people who are very good at content writing, but they don't know one-on-one sales. उनके लिए वहाँ help करते हैं. So we tell them, hey, these are the courses that you have to consume. Specifically, not even the courses, but ये video देख लो और book a one-on-one call with us, consult with us. Mostly it is my team, but in very rare cases, I am also going ahead and doing consulting for them. And a lot of time mindset issue होता है that they are copying someone's strategy, they are trying to replicate it, it's not working. And we tell them, boss, your target market के लिए, this is the strategy that will work because this is not the same as other market. Your market ka needs are different. So this is how you should go ahead. So freelancers, consultants, agency owners, coaches, mentors, doctors, lawyers, anyone who wants to scale their business to more than 1 crore per year or beyond by leveraging their personal brand and expertise is the target customer for Alpha Club. And we are basically telling them, भाई आप तुम्हारे इंडस्ट्री का डिजिटल दीपक बन जाओ. That people should know you by your name, and until a point, the business will be built around your expertise. So anybody who is an expert in a specific field and is a creator, they can go ahead and basically leverage Alpha Club ka, whatever system we have to increase their revenues. So the primary marker is revenue increase, and minimum revenue increase is 3x within 1 year is what we are literally guaranteeing. But they need to do the work to get there. You can't join Alpha Club and just hang out with us and expect revenue to go up automatically. But if they do the work, 3x is the minimum that I am saying. If they are making 2 lakh a month, they will start making 6 lakh a month within 1 year time span. There are people who have done 5x, 10x also. Wow. दीपक, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, मतलब सारे मार्केटर्स के लिए है ये, कि आपको लगता है कि मार्केटर्स की जॉब खतरे में बिकॉज ऑफ द AI कैन डिस्ट्रॉय डिजिटल मार्केटर्स? You can't say that. If you know how to leverage it, you won't be destroyed. As I said, if you focus on the emotional component of it, I don't think a robot can do one-on-one sales. Never. Because one-on-one sales में information नहीं होता है भाई, उसमें emotion होता है. Desire. A desire for them to achieve their goals. And once they talk to us, they have a new belief that they can achieve their goals. There are people who will do one-on-one sales calls with us, not buy our product, and just because they did the one-on-one sales call, they will still go ahead and be better. So always leave your prospects better than you find them, Jayant keeps telling. So that way you are always impacting them on a very, very deep level, which I don't think AI can do. AI can give you a lot of information. Abhi, imagine you have a girlfriend. Yeah. The way the girlfriend knows you, and let's say a way a doctor knows you, both know you. A doctor also knows you, your family doctor knows you, they know your name. Your doctor probably has more information about you than your girlfriend, right? Uska whatever, what is the health status of you, or usme data hai, bahut sara data hai, blood group hai, vitamin levels hai. Your doctor knows you in a certain way, but your girlfriend knows you in a certain way. Right. But the way your girlfriend knows you, can it be replicated? Let's say your girlfriend sits and talks to another girl about you, and it tells everything about you. All the data to mil gaya abhi, but does that girl know you the same way that your girlfriend knows you? Definitely not. So ye component AI mein kaise replace ho sakta hai? Yeah. And that is the final frontier, right? And this is what humans have wanted all the time. Abhi, there has always been this debate. Do you want to chase money, work hard,
and then become unhealthy and not spend time with your family in the pursuit of improving the quality of your life and providing more for your family, or go to a village, do all the work yourself, don't have any help, Swiggy, Zomato nahi hoga, internet nahi hoga, technology nahi hoga, but you will end up spending more time with the family. There has always been a debate. Humans could never have both at the same time. Technology bhi hai, income bhi hai, और family के साथ time भी है. So that way, even for digital marketers, right? What do digital marketers want? Digital marketers want more freedom. You want to make more income with whatever you are doing with automation and everything. So AI will only enhance it. But if there is somebody digital marketer saying that, hey, मैं banner design करता हूँ and मैं कुछ भी नहीं करता, मेरे पास community नहीं है, I don't have a personal brand, I don't have a YouTube channel, I don't write, I don't communicate, सिर्फ banner design करता हूँ, obviously he is under risk. If there is someone who is writing content, ghostwriting content for others, he might not be under that much risk, but obviously he is also under risk because ChatGPT can write the article. But जो personality है, जो character है, you go and attack that layer of the industry, जिसमें people are not paying you just for some commodity. It's not a transactional relationship. So any digital marketer, if they are not building their personal brand, if they are not going ahead and doing something on the emotional component or the empathy component or the community component, they are under risk. But anyone else like you who is now building an audience, building fan base, AI will only give you more time and more leverage and more power to grow it even faster. Right? And people, when they use AI in their own life, they get more free time to engage with you, to spend time with you. Abhi मान लो कि you have all the money in the world and you have nothing else to do and there is no job to do also, but you have the money. What will you do? You'll just hang out with friends all the time. Right. Now that is a need. Hanging out, building friendships, building emotional connections is a need. So digital marketers have to focus on that. Amazing. दीपक, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए ऑडियंस को, बेसिकली दोज हु आर गेटिंग इनटू हाई टिकट एंड एवरीथिंग, तो जस्ट आप एक नंबर थ्रो करना चाहोगे इन मंथली हाउ मच यू आर मेकिंग राइट नाउ, if you are comfortable? I'm making enough to live a very comfortable life, boss. And I was at a point in my life, I was making even more money. But I think at some point in my life, chasing dreams, because अभी अच्छा घर मिल गया, अच्छा वाइफ मिल गई, अच्छा कार मिल गया, अच्छा ऑफिस मिल गया, अच्छा टीम मिल गया, I don't work for money anymore. I work for enjoyment. So I literally can't put a number to it. I have enough, more than enough to save, put some in crypto, put some in real estate and everything. But I think that money is different for different people. Like abhi Bangalore mein, Koramangala mein, cost of living is high. So somebody, like what everybody wants. I would say that, like, everybody's wallet is only made of number of days that you have remaining. So let's say I'm 35 right now and I live for another 50 years. That's 50 into 365, 18,250 days, right? So मेरे पास 18,250 days है. That is my bank balance, right? How I make use of this time is the only thing that matters. So for anyone who is trying to make their life better using digital marketing, they can live at 50,000 a month also very happily in a tier 2 city, make enough money using digital marketing, spend time with family, get everything that they want. Because that number does not make any sense. There might be somebody who is making, let's say 5 times or 10 times more than me and he is sitting in Mumbai. Whether his quality of life is better than me, I don't know. It might be worse, even if he is making more money. Because this number is always about the quality of life, right? And quality of life is depending on whether you are loving what you do, whether you are staying with the people that you like, and whether you have enough free time to pursue the things that you like. Like, sometimes go on a vacation, sometimes go hang out with friends, sometimes read books. So it's not like I don't want to reveal this, but this number does not make any sense anymore. राइट ओके दीपक, मैंने आपको ना लिटरली किसी ने आपको इतना फॉलो नहीं करा होगा जितना मैंने आपको फॉलो किया है. इसको कहते हैं ना घुस जाना स्किन के अंदर. मैंने आपको ऐसे फॉलो किया, कर दिया मैंने. हाँ, आपके जब लंबे हेयर्स थे, लंबे बाल थे, आप बाइक चलाते थे, रैंप, आपके पास बाइक थी, कौन सी बाइक थी, कौन सी गाड़ी थी, क्या गाड़ी का नंबर था, कौन सा घर था, घर के आगे लॉन था, डॉग कौन सा था. मैंने आपको बहुत अच्छे से फॉलो करा है. मतलब डीपली जाके मैंने कहा कि मुझे डिजिटल दीपक की तरह बनना है. जब मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया था, एंड मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी है. मतलब थोड़ी नहीं, बहुत सारी चीजें सीखी है. और मुझे
आपकी लाइफ के बारे में सारी चीजें पता है। आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो ही आप बताना उस चीज के लिए। क्या मैं आपकी पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ? हाँ, लिटिल बिट, या। ओके, आई थिंक वो तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो गया अभी, बीइंग अ पर्सनल ब्रांड। राइट, क्योंकि देखो मैं आपको जानता हूँ और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आती है कि यार इस बंदे ने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा होगा जो वो हमें बता सकता है कि कुछ गलती हम ना करें इन फ्यूचर में जाके, कुछ मिस्टेक हमसे ना हो। सो दीपक, आई नो कि दिस इज योर सेकंड मैरिज, राइट? या तो ऐसा क्या था कि जो फर्स्ट मैरिज काम नहीं कर पाया? आई थिंक आई वॉज वेरी इमेच्योर, ओके, and it's easy to put the blame on myself and more fair to put the blame on me because marriage is not for kids. उसमें एक person का full time emotions handle करना है, right? And it brings in a lot of responsibility. So I was always feeling bad about it because I think I got married too early. 23 में engagement हुआ, 24 में marriage हो गया. And when you are getting married too early, no, you are still growing. Your view of the world is still developing. So I would say that rather than saying that I was the bad person or I did the mistake or whether she did the mistake or she was a bad person, we were just not compatible with each other. हमका world view beliefs बहुत divergent हो गया. Like, depending on like, how much you have to spend for what kind of life you should live, how you should raise kids and everything, complete opposite 180 degree difference था. And I think इस जमाने में the demands on men is unrealistically high inside a marriage, and the later you get married, the better it is and the more chances that it will work because you will be very clear on what you want out of life, because you have to fill your own cup first, only then it will overflow to others. And when you are looking for the partner that they will come and fill your cup and they will give you happiness and they are also expecting that you will give them happiness, सब खराब हो जाता है. So I think the right age for men to get married is 42 after they have the first heart attack. No, I was just kidding. But the right age for men, I think, is definitely around 32 to 35 because men keep growing until then. And in terms of maturity, in terms of finance, in terms of worldview, everything keeps evolving until 32 to 35, and it keeps evolving even to 40, 45. Like Leonardo DiCaprio is 48 and still dating like 20-year-old girls. So if somebody wants to do that, they can still do that. But if you want like a family, you want to settle down and everything, 35 के ऊपर dating pool थोड़ा कम हो जाता है because everybody is getting settled down and married. So but people need not panic that अरे 28 हो गया, marriage कर लेते हैं. All this fear is only installed by aunties, right? Whenever you go to a family function, सब 29 हो गया, 30 हो गया, अभी तक क्यों marriage नहीं हुआ? Dude, like I'm like a guy, I want to explore more of life. I want to travel to different countries. I want to try different jobs. I want to meet different people. And you have to do all that until like 33, 35. And then settle ho jao. There is a very, very high chance that the marriage is going to be stable. And it is very important that the marriage has to be stable in the interest of the kids that you might possibly have and the stability that you are bringing to the home. And I don't believe that men and women are equal. I believe that men and women are complementary. Men can't be women, women can't be men. Yes, there are certain things that women can do that men can also do, like go out and earn money and stuff like that. And there are certain things that men can also do at home, but you cannot expect, 100% equality in everything, because men bring in a structure and a stability into a family, right? In terms of, hey, where are we going to live? What career am I going to do? What risks am I going to take? And different men के लिए different risk taking capacity होता है, right? I am a very high risk taker in my personal life and in my business. I'm a very high risk taker, but a very calculated risk, right? So all that kind of brings in a structure, which means that you are also choosing where to live, which house to buy, whether I can pay the EMI for this or not if I am taking a loan. Those up decisions, I think, has to be taken by men to a large extent. And women would prefer that you take the leadership role on that, right? वो structure बन गया और जो structure के अंदर fill हो रहा है, that women are very good at doing it. They will decorate the house,
cook food, which you can also help in the kitchen. I am not saying that you should not help in the kitchen, you can, but still they will take the leadership role on how the house should be, the decor of the house, fitness and health, like nutritious food. And okay, आज नया variety कर सकते हैं. You can go chop onions, but they have to take the leadership on that, and fill the house with kids or pets, whatever it is. So you create the structure, they fill the structure. And I feel that men are naturally better at creating that structure, and women are naturally better at filling up that structure. So this difference nowadays is kind of getting blurred, right? And I also would not recommend in many cases where if you are going ahead and getting married, you should know that person for a while. You should not like go ahead and immediately jump into it. Talk to them, date them, ask very important questions about life. What is your belief about this? What is your belief about this? Belief about spiritual beliefs, religious beliefs. उसमें थोड़ा alignment भी होना चाहिए. If it is like very much far apart, it would be very difficult. And I recommend this because जो भी first 2 years में आता है, that is not life. Marriage is a whole different challenge. Yes, you have to stick together, but uska challenge completely different hota hai. That flowery feeling initially, what you get will not last for more than 2 years in any relationship at all. So once that is done, the person that you are left with is the person that you have to make it work for decades, 40 years, 50 years, 60 years, and be committed. So you have to be more of a friend, and that is why having a relationship with them, getting to know them, becoming their friend is very important before you like go ahead and make an irreversible commitment. And if you have to bring down this advice into one single line, 20s to 30s mein, you don't have enough life experience, so you will make the wrong decisions. You should be able to reverse your decisions. Most of the decisions in life are reversible. You join a job you don't like, you can quit. You start a business, doesn't work, shut down, go get a job or start another business. You move to a new city, you don't like that city, come back. You move to a new country, you don't like that country, come back. You have a new friend, you don't like him, get few more friends and stop talking to that friend. Marriage is not reversible. And if you try to reverse it, the cost is just enormous, right? Emotionally, financially, socially, everything there is a cost, right? So why take a decision that cannot be reversed before you have enough maturity to take the right decision? So 30K, before, don't take any decisions that is not reversible. Right? And marriage is the biggest irreversible decision that you have to make. Right. And then rather than making the wrong decision and the whole society trying to force you to live through that decision for the rest of your life, and then spending a lot of emotional, financial, social cost to get out of it, just wait. No, even if you are single, what's wrong? A lot of people will be like, I have been in love since school days, and they would have never lived together. And then they start living together and वहाँ layer spill होता है after you start living together, and then it becomes difficult. So yeah, marriage is not for kids. सबसे पहले तो दीपक congratulations, आपकी अभी भी शादी हुई है. एंड मैं आपका वीडियो देख रहा था जिसमें आपने बोला था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ज़रूर बात करता हूँ, उसके लिए टाइम ज़रूर निकालता हूँ मैं. राइट, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, मतलब सारी चीज़ें देखता हूँ मैं आपको. तो मैंने आपसे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बहुत सारी चीजें सीखी है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब आपने मुझे एज अ मेंटोर गाइड करा इन अ फील्ड ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू रिलेशनशिप और मैं भी चाहता हूँ कि वो सही तरीके से चले और वो ऐसा ना हो कि बाद में जाके कुछ गड़बड़ हो. और इस वाले आपके एक्सपीरियंस से मैंने सच में बहुत कुछ सीखा है. दीपक, अभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी वाइफ आपके साथ बैठी हो, सनी लियोन निकल गई और आप देख रहे हो, वाओ, ऐसा होता है आपके साथ? I think ऋतिक रोशन आता तो वो भी देखेगी, सनी लियोन आएगा तो मैं देखूंगा. We are mature enough to understand that beyond our intellectual capacity एक biology भी है. Right. So you can't do anything about it. Cool. But सिर्फ देखेंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते. Wow man, wow. दीपक, सच में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है. एंड आपसे बात करके बहुत मजा आ गया, क्योंकि पता है स्टार्टिंग से किसी को फॉलो करते हो, उसकी हर चीज फॉलो करी, उसकी तरह नाम रखा, उसकी तरह ब्रांड बिल्ड करा, उसकी तरह अब बिल्कुल कंपटीशन में आ गए हम कि एक ही इंडस्ट्री में आपका भी हाई टिकट, मेरा भी हाई टिकट. एंड मतलब सच बता रहा हूँ कि कंपटीशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई कंपटीशन कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा ही आपसे एक तरीके से देखा जाए तो. एंड
मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ, अभी तक हम मिले नहीं है, एक भी बार अभी तक हम मिले नहीं है। एंड आई नो जब हम मिलेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। एंड आपका एजेंसी भी है ना, पिक्सल ट्रैक? या आपका एजेंसी कैसा चल रहा है? एजेंसी अच्छा चल रहा है. We are not taking too many clients because I like to have a lot of free time and focus on Alpha Club and our mastery courses. But whenever we get a very interesting client, एक नया challenge है, we take it up just for the learning. Because my biggest thing is that when you are in the coaching industry, you have to practice what you preach. If you Right. just keep preaching, then there is no difference between you and an MBA professor who is teaching business who has never done business. वो राइट। भी fake guru है, right? And there are a lot of MBA institutions where people are talking about management concepts and they have never run a business. So you have to keep your knives sharp and you should only practice what you preach and preach what you practice. अभी industry में बहुत लोग हैं who are like just preaching. Like, you know, how funny it would be that a person is like fat, unhealthy, and he is your gym trainer. You will laugh at him. You have a gym trainer, he is fit. And you go ahead and work with him because he is fit and he is inspiring, right? So that way, when you like, let's say you are learning yoga from someone, he is also a yoga practitioner. He does yoga every day and he is teaching you yoga. But like a lot of industries may, it is natural that you only learn from somebody who is practicing it regularly. But सिर्फ digital marketing, internet marketing, online coaching industry में ऐसे हो गया कि hey, I will go ahead and teach you high ticket sales. तुम क्या करते हो? I do high ticket sales. For what? For a program on high ticket sales. Like bye. Correct. Right? So that is why I am running the agency. I am doing my coaching business and I am also teaching what I am doing in Alpha Club. Tomorrow we are also planning to build software and how to build software. I might teach in Alpha Club and everything. I cannot say that, hey, this is the only thing that I do. So there are, people, online who you keep seeing ads from. Don't want to name anyone, but they don't have any business apart from coaching and they call themselves successful entrepreneurs. But their only business is coaching, right? And then they go and flash their cars or bikes or whatever and everything, and people still fall for it. But eventually people will fall for it, then go inside and then figure out that iska success I cannot go and copy it directly. And if I have to copy his success, then I have to become him. Which means that I also have to go and tell other people, hey, how do you sell high ticket or how do you do coaching. So coaching coaches, ऐसे हो जाएगा market, right? So it's not very difficult to make yourself authentic. You just make sure that you are doing what you are preaching. So if somebody is teaching YouTube, hey, I will teach you how to grow to 1 million subscribers. भाई तुम्हारे पास 1 million subscribers है क्या? Then you come and teach me, right? So that is the most important thing. And overall, when I think about competition only helps you grow the entire market size. Because when I started launching my courses, there are a lot of competitors like Simply Learn, Digital Vidya, everybody selling digital marketing. And if they are advertising, and let's say 10,000 people see their ad, only maybe 5 or 10 customers are actually going to buy from them. But all the rest of the people are actually getting thoda convinced that, hey, looks like I need digital marketing, right? And competition is growing your market. I am growing the market for my competition also. When I am advertising free lead magnets, digital marketing seeko, not everybody will come and learn from me. Somebody might not feel like learning from me or might not afford my services. They will go and learn from somebody else. So the competition is increasing the size of the entire pie. The pie is not limited and somebody is taking your pie, right? So I'm happy that you are also doing high ticket because let's say there are 1,000 different coaches selling products at 2 lakh in India. 2 lakh won't be a high price point anymore because people will be like, yeah, AE market rate hai. Just like you see all the jewelry stores in one road. Why? I used to ask my dad, like, there are so many jewelry stores in this road. Why can't somebody go and put a jewelry store somewhere where there is no jewelry store? Why are they coming and putting here only? Because that is where the market is growing, right? तो या मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ. कंपटीशन तो कहीं से कहीं तक है भी नहीं क्योंकि यू आर द सचिन तेंदुलकर एंड आई एम द विराट कोहली, क्योंकि मैंने आपसे सीखा है वो चीज़. तो कंपटीशन कहीं से कहीं तक नहीं है. एंड लिटरली मैंने बहुत कुछ चीज़ सीखी है और आगे भी मैं सीखता रहूँगा क्योंकि मैं अपने अंदर ना हमेशा चेंजेस लाता रहता हूँ और वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इवन जैसे AI आया, आई एम ऑल सेट, आई एम प्रिपेयर्ड और मुझे पता है कि 1 महीना मुझे बैठ के इसको करना है एंड आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी सिंगल डे.
और मैं 4-5 डायरी भर चुका हूँ AI से लिख के कि क्या बनाना है, किस तरीके से मार्केट में उसको लेके आना है, मार्केटर्स के क्या फियर है, वो सारी चीज़ें एकदम दिमाग में है कि किस तरीके से करना है, बस मुझे लॉन्च करना है उसको। और ये सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी, आप सिचुएशन को कैसे पकड़ते हो, कैसे मार्केट करते हो, वो सारी चीज़ें वो मैंने देखा है क्योंकि बहुत डीपली फॉलो करा है। एंड दीपक सच बताऊँ, आपसे बात करके बहुत 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 मज़ा आया मुझे। एंड कोई फाइनल नोट आप देना चाहते हो मुझे? एक नोट मेरे लिए और एक नोट मेरी ऑडियंस के लिए। You look like a very happy person who is successful, getting more successful every day, having a lot of enthusiasm about growth, business and everything. इसको spoil मत कर लो with a marriage. So wait for as long as possible before it absolutely becomes necessary by मुझे marriage करके settle होना है. So I want to protect it and protect it for your audience as well, because if you are single and if you are anywhere from 25 to 33, all the energy that you have, career success to ho jayega. It's not like this is what you do and this will give you career success. Your biggest problem is productivity. You have family responsibilities, or you end up getting into some commitment which will not let you take risks or keep learning and do things like work on Saturdays, Sundays and things like that. That will be like the biggest problem. Anybody who is single from 25 to 33 period of life will definitely become successful. At least they will become successful because they have to get a girl. Right? And Obi, like, for example, you cannot be always well fed, right? You have to fast sometime. And fasting kya hota hai? Like, fasting will increase the craving for food, right? It will generate enough dopamine in your system which makes you go on hunt for food. Right. That's what fasting does. Your brain starts working that way. So don't settle down very early in life. And I think that can be like the single biggest hack for success is to be single, because it keeps you hungry for wanting, future may settle down hone ke liye, that hunger. So ride that hunger for as long as possible and don't satisfy that hunger too early. Because if you satisfy that hunger at 25, then you will, by 35, you will become like fat, obese, not very motivated in life, complaining about your boss, working in some IT company, drinking alcohol, getting into bad habits. That's what happens. And 35 to 45 mein midlife crisis ho jata hai for most of the people. So I think you should ride that hunger as long as possible. And I think that would be my advice for you. Because for me personally, I felt like 30 to 35 I was single. Now I am 36. And 30 to 35 has been the best period of growth in my life. And the best period of growth was before I was like 24, right? 18 to 24 was one growth spurt. And then it kind of went down because of myself, not because of somebody else. Because of myself, because that environment was not there. And I was not keeping myself motivated. Then I became single, again broke, starting from scratch. And there was this hunger in me. That kuch karna hai. So whatever we have today is because of that hunger. So my biggest fear was that, we are getting married again. Will that hunger go away? But right now, I think we have made enough progress that if I try to become lazy right now, it would be too much of leaving an opportunity on the plate. वो struggle का time नहीं है अभी right now, because things are already in place, and if I continue working like the way I am working, इतना uncertainty भी नहीं है, so it will eventually lead to big places, might be even $1 billion company someday. But until you reach here, it's very difficult to motivate yourself. And if you don't have that hunger, at some point you will drop it. Like if I am starting right now from scratch, it would be very difficult for me to keep that motivation. Wonderful. Deepak, thank you so much. बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट के लिए. थैंक यू सो वेरी मच. Awesome man, thanks for hosting me. Bye. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि AI फीलिंग्स को रिप्लेस नहीं कर सकता. अगर कर दिया तो पहले हम ये भी सोचते थे कि गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, लेकिन आज चल रही है. और मैंने इस पॉडकास्ट से पहले AI के बारे में नहीं पढ़ा था, और जब मैंने AI के बारे में पढ़ा देन मेरा दिमाग फट के हाथ में आ गया. और मैं सोच भी नहीं सकता ऐसे ऐसे टूल आ गए. आपने एक रॉ वीडियो क्रिएट करा और YouTube के लिए एकदम एडिटेड वीडियो आपके सामने आ गई, फिनिश वीडियो. आपको ऐड कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको स्क्रिप्ट देना और आपकी ऐड कॉपी निकल के आ जाएगी. ऐसे ऐसे टूल हैं मार्केट के अंदर जो शायद
इन फ्यूचर फीलिंग्स को भी रिप्लेस कर देंगे। और मैंने AI के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज अ डिजिटल मार्केटर, नाउ आई एम फुल टाइम डूइंग दिस AI वर्क। एंड हमने एक बिल्ड करा है AI लेगेसी मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करा है। अगर आप ये अपने बिजनेस के अंदर डालते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा। और जितना आपका टीम का खर्चा, एक्सपेंसेस है, सारे कट हो सकते हैं। वीडियोग्राफर, फोटोग्राफी वगैरह सारी चीज़ें आप ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हो, सिर्फ AI टूल के थ्रू। अगर आप लोगों को जानना है, सीखना है, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे देता हूँ। वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपकी मदद करूँगा आपके बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज करने में, बिकॉज AI इज़ द फ्यूचर। आई होप आपको ये पॉडकास्ट समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। जो भी आपके मन में है, दिल में है, प्लीज़ डिस्क्राइब करो अच्छे से, बड़े कमेंट, जो भी आपकी फीलिंग्स है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी कि आप क्या सोचते हैं AI के बारे में। और अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट सुनने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। So guys, thank you so much and I'll see you in the next video. Bye bye.